Hello students, here I Karki Pamar, Assistant Professor BBA in St. Andrews Institute of Technology and Management. So guys, here I'm back with an online lecture series on BRM subject. So let's start the lecture. So in today's lecture, we will discuss some more topics from 4th unit. In last lecture, we have discussed the various statistical techniques under univariate analysis. Now, in today's lecture, we will discuss more techniques under univariate analysis and bivariate analysis text. Okay, so let's have a look. Let me show you the slide. Yes. So see, in last lecture, we have discussed these five kind of statistical techniques, which falls under A point, that is measurement of measures of central tendency under univariate statistical techniques. Okay. Now, in univariate statistical techniques, we will discuss today B point, that is measurement of skewness. Okay, measurement of skewness. So see, what is the measurement of skewness? Say, you use this kind of measures when you want to know the symmetricness of between, symmetricness among the various data. Okay, so see, what is it? Measures of skewness determine the extent of asymmetry or lack of symmetry. A distribution is said to be asymmetric if its graph does not appear similar to the right and to the left around the central position. In more statistical language, the skewness measure how much is this asymmetric of probability distribution of some given revalued random variables about the mean. Skewness can be observed in the given data when number of observations are less. Okay, so you have data and you want to know the symmetricness among these data. तो जब आपको आपके जो भी ऑब्जर्वेशन है, जो भी आपकी पॉपुलेशन है, उसमें सिमेट्रिकनेस को अगर आइडेंटिफाई करना है तो यू विल मेजर द स्क्यूनेस. Okay, then what is symmetricness and asymmetry? What is symmetry or asymmetry? Symmetry means जब आपका जो भी जो भी ट्रेंड में अगर कुछ चल रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग नेचर में है, कंटिन्यूस डिक्रीजिंग नेचर में, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक है. एसिमेट्रिक कौन से डेटा होंगे जो कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन स्लो देन इंक्रीजिंग रेट कभी ज्यादा, कभी इंक्रीजिंग रेट कम हो रही है, कभी डिक्रीज हो रहे हैं, कभी डिक्रीजिंग रेट ज्यादा है, कभी कम है. दैट इज कॉल्ड asymmetric. और व्हाट इज सिमेट्रिक? In symmetric, when your data is running in a train, continuously increasing है या continuously decreasing है, that is called symmetric data. Okay, so a distribution is said to be asymmetric if it is graph is not appear similar to the right and to the left around the central position. तो skewness के measurement के लिए आप एक शेप बनाते, ग्राफ बनाते, बेल शेप, एक बेल की शेप में एक आपका ग्राफ बनेगा. उसमें क्या होगा, अगर आपका अगर सिमिलर आपका सिमेट्रिक नहीं है, सी और डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक asymmetric if its graph does not appear similar to the right and to the left around the central position. तो central position से दोनों साइड अगर इक्वल स्पेस नहीं है आपका, बेल शेप जो बनाएंगे, बेल शेप का जो आपका ग्राफ बनेगा, उसका सेंट्रल पॉइंट से अगर दोनों साइड इक्वल नहीं है सेंट्रल पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड असिमेट्रिक. और सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में होगा सेंटर पॉइंट जो आपका होगा बेल शेप का, जो ग्राफ का जो सेंटर पॉइंट होगा, वो आपकी बेल शेप को टू पार्ट्स में डिवाइड करेगा, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा. दैट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना चाहते हैं दैट योर डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक, देन यू विल यूज द मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस. और स्क्यूनेस में आपका जो भी डेटा होगा आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे बेल शेप ग्राफ में, जिसमें अगर सेंट्रल पॉइंट पूरे ग्राफ को, पूरे बेल शेप ग्राफ को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक. और बेल शेप को अगर दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, एक साइड ज्यादा स्पेस होगा, एक साइड कम स्पेस होगा, देन योर डेटा वुड बी डिस्ट्रीब्यूशन वुड बी नोन एज asymmetric. Okay, yes, so this is about the measure of skewness. Now there is a technique. It's in skewness, in the measure of skewness. First is one is Spearman
Pearson होगा I think ये Pearson sorry okay Pearson coefficient of skewness. Pearson coefficient of skewness sorry. So what is it? See, the methods of finding skewness is also developed by the Carl Pearson. This method is known as Pearson's coefficient of skewness. According to this method, there are two formula for the measurement of skewness. The formula is mean minus mode upon standard deviation. Okay, so for that you have to follow this formula to calculate the Pearson coefficient of skewness. अब इसमें दो formula आपको put करने पड़ेंगे. What is it? पहले आप मीन का फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर मोड का फॉर्मूला पुट करेंगे, मोड कैलकुलेट करेंगे आपके डिस्ट्रीब्यूशन. सो देन यू विल डिवाइड द स्टैंडर्ड डेविएशन. You will calculate the standard deviation by given data and you will divide mean minus mode by standard deviation. Okay, so this will be the formula of Pearson coefficient of skewness. Okay, yes. Now let's talk about the bivariate statistical technique. So we have already discussed what is bivariate statistical techniques. Bivariate statistical techniques are those techniques in which two variables if we are comparing two variables and we want to see the relationship between two variables, then none of the variable is independent. All the variables are dependent to each other. One variable is dependent on another variable. Okay, so first is correlation analysis. So correlation analysis is the method, in bivariate statistical techniques. First statistical technique is correlation analysis. So what is it? See, correlation analysis is a method of statistical evaluation used to study the strength of a relationship between two numerical measured continuous variables. So if you want to see the two numerical variables, see the relationship between two numerical variables, then you can use the correlation analysis. Like heights and weights. If you want to see the relationship between height and weight, then you will use the correlation analysis. Okay. So there are some types of correlation. So first is on the basis of degree of correlation, on the basis of number of variables, and on the basis of linearity. So on the basis of degree of correlation, there is two type of correlation: positive correlation and negative correlation. On the basis of number of variables, positive correlation और negative correlation means अगर आपका एक फैक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी उसी उसी वे में उसी साइड में इंक्रीज हो रहा है. सपोज एक अगर इंक्रीज हो रहा है दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, एक अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज हो रहा है. तो दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कोरिलेशन. और एट द सेम टाइम एक फैक्टर के इंक्रीज होने के साथ दूसरा फैक्टर डिक्रीज हो रहा है, दूसरे फैक्टर फर्स्ट वेरिएबल की डिक्रीज होने से सेकंड वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है. ओके, तो दोनों के बीच में ऑपोजिट रिलेशन, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन. Now, on the basis of number of variables, there are simple partial correlation, multiple correlation, and on the basis of linearity, there are two kind of correlation: linear correlation or non-linear correlation. Okay. Now, first is correlation analysis under bivariate statistical techniques. First statistical technique is correlation analysis. Then second is regression analysis. So what is regression analysis? See, regression analysis is a form of productive modeling technique which investigates the relationship between a dependent and independent variable. These techniques is used for the forecasting time series remodeling and finding the causal effect relationship between the two variables. For example, relationship between rush driving and the number of roads accident by a driver is best studied through the regression. So जब आप टू वेरिएबल जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है, उसका अगर एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो एनालिसिस ओनली टू फैक्टर. रिग्रेशन एनालिसिस इज यूज्ड फॉर ओनली टू फैक्टर्स. जब आपको सिर्फ टू फैक्टर्स के पीछे में रिलेशनशिप देखना है, देन यू विल यूज रिग्रेशन एनालिसिस. एक का दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरे का फर्स्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, देन यू विल यूज रिग्रेशन एनालिसिस. तो इसका बेस्ट एग्जांपल है एक रैश ड्राइवर और द ड्राइविंग और द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, देन यू विल यूज द रिग्रेशन एनालिसिस. ओके, yes. So this is about the techniques which we use to analysis the bivariate variables and bivariate analysis. These statistical techniques we will use, the regression and correlation. Yes. Now the next topic of your syllabus, and that is also last topic of your syllabus, that is research report. So what is the research reports? Let's see. Mostly research work is presented in written form. The practical utility of research study depends heavily on the way it is presented to those who have expected to act on the basis of research findings.
research report is a written document containing key aspects of the research project. तो अब आपने रिसर्च तो कर लिया, लेकिन जब तक आप उसको रिटन फॉर्मेट में नहीं लिखोगे वो रिसर्च किसी के लिए भी यूजफुल नहीं होगा. सो रिसर्च रिपोर्ट बेसिकली एक रिसर्च एक रिटन डॉक्यूमेंट में आपने जो भी रिसर्च किए हैं, आपके जो भी रिसर्च टर्म्स रही हैं, जो भी आपके इम्पोर्टेंट काम आपने किए हैं, इम्पोर्टेंट रिसर्च जो की है, उनके बारे में आपको कंप्लीटली इन्फॉर्म करना रिटन में लिखना होगा. दैट रिपोर्ट विल बी नोन एज रिसर्च रिपोर्ट. ओके, तो जब तक आप रिटन फॉर्मेट में अपने रिसर्च को नहीं लिखेंगे वो किसी के लिए भी यूजफुल नहीं है. वो सिर्फ आपके लिए यूजफुल है कि आपने एक्सपीरियंस करी है जो चीजें, वो आपको पता है. जब तक आप रिटन डॉक्यूमेंट में नहीं लिखोगे वो रिसर्च किसी के लिए भी यूजफुल नहीं है. तो व्हेन यू राइट योर important aspects of your research in a written form, then that written format will be known as research report. Okay. Now, written document, the aspect of research report. Research report is a medium to communicate research work to its relevant people. It is also a good source of, sorry, preservation of research. Preservation. A good source of preservation of research work for the future reference. Okay. तो अगर फ्यूचर में कोई भी सेम टॉपिक पे रिसर्च करना चाहता है तो दैट इज, अगर आप रिसर्च रिपोर्ट अगर आप तैयार करते तो दैट रिसर्च रिपोर्ट विल बी अ प्रेजेंटेशन फॉर दैट future reference for future research. Okay. Many times researcher findings are not followed because the improper presentation. तो sometimes क्या होता है कि आपकी जो भी रिसर्च आपकी रिपोर्ट होती है वो लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि उसको प्रॉपर मैनर में आपने प्रेजेंट नहीं किया होता, कुछ भी उससे अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, समझ ही नहीं आता कि आपने आपके रिसर्च में करा क्या है. So your research report must be in proper format and presentation should be a proper form. Okay. तो अगर आपकी improper presentation होगी तो कोई भी आपकी research report को रेफर नहीं करेगा. Okay. So preparation of research report is not an easy task. It is an art. It requires a good deal of knowledge, imagination, experience, and expertise. It demands a considerable time and money. So for prepare the research report, this is not an easy task. You need some experience, you need some knowledge for that, and writing of research report demands huge time and money also. According to Lensford, a report is the statement of collected and considered facts, so drawn up as to give the clear and concise information to the person who are not already in the possession of the full facts of that subject matter of the report. So, a research report is useful for those people who are taking the reference of your report, who is taking the reference of your research, who is using your research. Okay, that is beneficial for those persons. Now, there are some characteristics of research report. So, see what is it. First characteristics of research report is accuracy. So, आपकी जो भी research report है उसमें accuracy होनी चाहिए, high level की accuracy होनी चाहिए. जो भी information आपने provide करवाई है, वो these information should be accurate. Okay, उसमें कोई भी false statement नहीं होना चाहिए. Then second is simplicity. देखिए आपकी रिपोर्ट जितनी सिंपल होगी उतना ही लोग आप उसको समझ पाएंगे और इंटरेस्टेड होंगे उसको पढ़ने में. जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट होगी, कोई भी रिसर्च रिपोर्ट अगर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो बीइंग अ यूजर आप उसको प्रेफर नहीं करेंगे यूज करना. ओके. एंड कंप्लीटनेस. तो कंप्लीटनेस इज आपकी जो भी रिपोर्ट है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ऐसे नहीं कोई इंफॉर्मेशन आपने स्टार्ट कर दी लेकिन उसको आधा ही बीच में छोड़ दिया, उससे कोई भी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी. ओके. तो जो जितने भी एस्पेक्ट्स आपने यूज किए हैं अपने रिसर्च में उनकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन वहाँ होनी चाहिए. देन ब्यूरिटी. ब्यूरिटी देखिए क्या है. तो इन्वेस्टिगेशन विल नॉट फाइंड द सफिशिएंट टाइम टू रीड द लेंथ रिपोर्ट. तो लेंथी रिपोर्ट. सो कोई भी इन्वेस्टिगेशन होगा जो आपके रिसर्च को रेफर करेगा, आपको जो भी रिसर्च का रेफरेंस लेगा, अगर आपकी रिसर्च रिपोर्ट बहुत ज्यादा बड़ी है तो उसके पास इतना इनफ टाइम नहीं है कि वो आपकी पूरी रिसर्च रिपोर्ट को पढ़े. दैट्स व्हाई दैट पर्सन विल स्विच ऑन अदर रिसर्च रिपोर्ट. सो आपको अगर अपने रिसर्च रिपोर्ट को इफेक्टिव बनाना है तो आपको उसको ब्रीफ में लिखना होगा और सिर्फ एक्सप्लेन वाइटल पॉइंट्स जो मेन पॉइंट है वही आपको एक्सप्लेन करने चाहिए. ओके. देन इज अपीयरेंस. Appearance means your presentation, your format, your organizing of your report must be appearable. Okay. So the arrangement, organization, format, layout, and makeup of report should be pleasing and eye-catching. आपकी रिसर्च रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए. अगर आप कोई भी बहुत सारे बंदे के पास रिसर्च रिपोर्ट है जिसको रेफर करना चाहते हैं तो आपकी रिसर्च रिपोर्ट उसमें ऐसी होनी चाहिए जो आपके आईज को अट्रैक्ट करे. ओके. दैट
so your research reports must be appearable. नेक्स्ट इज रीडेबिलिटी. सो आपकी रिसर्च रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू रीड हो. ओके, जिसको पढ़ने में ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स आप यूज मत कीजिए. अगर आप इंग्लिश में प्रेजेंट कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स यूज ना करिए कि यूजर्स को समझने में प्रॉब्लम हो, या हिंदी में कर रहे हैं तो इतने ज़्यादा टिपिकल वर्ड्स यूज ना करें जिससे पढ़ने वाले को थोड़ी प्रॉब्लम. Then reliability. So your research report must be reliable. It should not create any erroneous impression in the minds of the reader either due to outsides or neglect. Okay, so आपको ऐसी कोई भी ऐसी कोई भी factors नहीं डालने, कोई भी ऐसी error नहीं करनी है जिससे लोग आपके rely नहीं कर पाए आपके रिपोर्ट पे, आपके रिपोर्ट reliable ना. Then economic. Report written should not be expensive. The most economical method and standard quality must be employed, which convening the information. तो आपके रिसर्च रिपोर्ट को आपको लिखने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ज़्यादा कॉस्ट ना लगे आपको रिसर्च रिपोर्ट में लिखने में. इकोनॉमिक होनी चाहिए आपकी रिसर्च रिपोर्ट. Then timeliness. To be useful and the purposive report should be reached at the readers in time. Any delay in submission of report makes the presentation of report is uh, full फुल टाइम एक्सरसाइज. यस, सो आपकी जो भी रिसर्च रिपोर्ट आप प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो विद इन द टाइम होना चाहिए. इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आपने स्टार्ट रिसर्च प्रपोजल दे दिया बहुत पहले. ओके, रिसर्च प्रपोजल आपने दिया बहुत पहले ही कि प्रपोजल का मतलब है जो आपको रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जो आप अपनी रिपोर्ट देते हैं, प्रपोजल देते हैं कि हम अपने रिसर्च में ये करने वाले हैं, ये हाइपोथेसिस यूज करने वाले हैं, ये हमारा टॉपिक है लॉ, और आप रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं उसके 10 साल बाद या 15 साल बाद. तो दैट इज नॉट टाइमलीनेस. तो टाइम विद इन द टाइम आप नहीं कर पाए, 10 साल बाद हो सकता है जो आपको पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड रीडर्स हैं वो खुद भी अपना रिसर्च कर चुके हैं उस टॉपिक पे, किसी और की रिपोर्ट पर रेफरेंस दें. ओके, सो विद इन द टाइम यू हैव टू यू शुड प्रेजेंट योर research report. You should not take the more time for the present your research report. Okay, so these are some topics that shows the characteristics of the research report. Okay, now next is types of research report. So there is various types of research reports. First is technical report. In technical report, the main emphasis is on the methods of employed, the assumption made in course of study, the details presentation of findings, including their limitation and supporting data. So a technical report are basically those report in which you explain your methods which you use, the hypothesis which you use, the assumption which you take for your research. Okay. Second is popular report. What is popular report? The popular report is one which give emphasis on simplicity and effectiveness. The simplification should be sought through the clear writing, minimization of technical parts, particularly mathematical details, and like liberal use of charts and diagrams, attractive layouts along with the large print, many subheadings, even an occasional cartoons now and then is another characteristic features the popular report. Despite in such a report, emphasis is given on particular aspect and policy implication. So popular report are those report which are very simple and attractive. तो आपको अपनी रिपोर्ट ऐसी, अगर आपने रिपोर्ट अपनी ऐसी तैयार करी है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, सिंपल है, दैट रिपोर्ट विल बी नोन एज पॉपुलर रिपोर्ट. और अपनी रिपोर्ट को सिंपल बनाने के लिए आप क्या क्या यूज करेंगे, क्या क्या यूज नहीं करेंगे. आप कुछ इमेजेस यूज कर सकते हैं, कुछ कार्टून्स यूज कर सकते हैं ताकि आपकी रिपोर्ट थोड़ी अट्रैक्टिव हो. लेकिन आपको ऐसे वर्ड्स यूज नहीं करने की जो भी बहुत टिपिकल हो. राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए, मैथमेटिकल एस्पेक्ट्स को कम से कम यूज करो, टेक्निकल वर्ड्स को कम से कम यूज करो. That is called popular report. Then interim report. So what is interim report? See, जब आपने जो डेटा कलेक्ट करा है वो और जो आप प्रेजेंट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं और जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं अपने रिसर्च रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बीच में अगर आपको बहुत टाइम लग रहा है ड्यू टू सम टेस्ट डेज एंड कुछ भी रीजन से अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है, टाइम लैग ज़्यादा है बिटवीन द डेटा कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट, in that case in case of sponsored product, the study may lose the significance and usefulness. So in that case आपकी study अपनी significance को कहीं ना कहीं lose कर देगी. Okay, so your study will lose your significance and usefulness of your report. Okay, in that case आप एक बीच में एक रिपोर्ट, जितना भी आपका एनालिसिस हो चुका है डेटा के लिए, उसके लिए आप एक बीच में एक रिपोर्ट मिड ऑफ द टाइम, आपका अभी तक रिसर्च कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन बीच में आपने एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी या प्रेजेंट कर दी, दैट रिपोर्ट विल बी नोन
summary report. What is summary report? A summary report is generally prepared for the consumption of the lay audience. The preparation of the type of report is desirable to any study whose findings are of general interest. It is written in non-technical, simple language with a liberal use of pictorial charts. It just contains a brief reference to the objectives of the subject and major findings for their implication. So, समरी रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट होगी? ऐसी रिपोर्ट जो आप नॉर्मल पर्सन के लिए, जनरल लोगों के लिए यूज करेंगे. जरूरी नहीं आप फर्दर किसी रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हैं या रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं. तो जनरल पब्लिक भी अगर कोई एक ले व्यक्ति आपका कोई ये वो लाइक आपकी रिपोर्ट पढ़े तो उसको वो चीजें समझ में आए, उसकी जगह आप कोई रिपोर्ट बना दो. दैट इज व्हाट समरी रिपोर्ट. टेक्निकल वर्ड्स को कम से कम यूज लेते हुए और ये दिमाग में रखते हुए अगर आप रिपोर्ट बनाते हैं, आपकी रिपोर्ट ऐसी है जो सिर्फ रिसर्चर के लिए नहीं है, टेक्निकल जो प्रोफेशनल बंदे हैं उन लोगों के लिए नहीं है. इवन दो सिंपल लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल पब्लिक है, उनके लिए भी अगर यूजफुल है, दैट इज कॉल्ड समरी रिपोर्ट. Then algorithm research report. There are problems with production scheduling, GIP, supply chain management, line balancing, layout design, portfolio management, etc. Exist in reality. The solution to each of the above problem can be obtained through the algorithm. So the researcher should come out with a newer algorithm or the new algorithm for the search report. So if you are presenting your report by using the algorithms, then that research report will be known as algorithm. तो किन कौन कौन से सिचुएशंस है, कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स है जिनमें आपको एल्गोरिथम रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट करना जरूरी है इमीडिएटली. दैट इज फॉर प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, जीआईटी, स्पेशल चेन मैनेजमेंट, लाइन बैलेंसिंग, layouts, designs, and portfolio management. So these are some topics in which these are some problems in which algorithm research report is made to present. Okay. Yes. Now let's talk about the ingredients of research report. So there are some ingredients of research report that are as follows. So first, in research report, you must prepare a title page in which what should title page will contain. It should contain the name of the topic on which the report is prepared, the person who or agency for whom it is prepared, and date of submission. तो आपको सबसे पहले टाइटल पेज लिखना है, जिसके टाइटल पेज पे आपको क्या होगा, आपके रिसर्च का टॉपिक क्या है, किस एजेंसी, किस पर्टिकुलर कंपनी पे आपने वो रिसर्च किया है और उसकी सबमिशन की डेट क्या है. देन टेबल ऑफ कंटेंट, आपके इसमें क्या क्या कंटेंट है उसके लिए आप एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं. जैसे आप इंडेक्स बनाते हैं कि ये वाला टॉपिक मैंने इस पेज नंबर पे डिस्प्ले किया, ये वाला टॉपिक इस पेज नंबर पे. सो दे सी व्हाट इज द टेबल ऑफ कंटेंट. इट इज इन आउटलाइन ऑफ द order of chapters, sections, subsection, which is their respective page number. If the report has charts, diagrams, and graphs, then separate table from the for them is prepared. So table of content जो आपने देखा होगा, आपकी भी जो बुक्स होती है, सिलेबस बुक्स होती है, उनके स्टार्टिंग एक इंडेक्स होता है जिसमें चैप्टर्स लिखे होते हैं, कौन सा चैप्टर किस स्टेज पे स्टार्ट है, किस पे उसके सब टॉपिक्स हैं. तो इस टाइप से आप एक टेबल ऑफ कंटेंट, सो दैट उससे क्या होगा कि जो भी आपके रिसर्चर हो, तो जिस पर्टिकुलर टॉपिक की स्टडी करनी होगी वो सेम पर्टिकुलर टॉपिक, इवन दो आपका पूरा थीसिस ना पढ़ के, आपकी पूरी रिपोर्ट ना पढ़ के, पर्टिकुलर पेज पे जाएगा, अपने में पढ़े तो टॉपिक को पढ़ेगा, उसको रेफरेंस के लिए यूज करेगा. Then forward. What is forward? It is a brief introduction about the research problems. It tells about when it when and where it come into existence, and importance of the problem, whether any prior research was done, etc. So then आप forward आप अपना पूरा description देंगे, introduction देंगे अपने research problem, what is the research problem, ये existence में कैसे है और क्या इस problem पे पहले भी कोई research हुआ है या नहीं, इस सब के बारे में आप describe करेंगे. Then you will give the statement of objectives. So आपका ये research करने के objectives क्या क्या हैं, आप वो objectives का statement देंगे. Then methodology. कौन सी research methodology you have used for your research, like research design you will describe, data collection method, primary data है, secondary data है, sampling क्या है, क्या sample आपने लिया है, field work क्या है, analysis and interpretation. You will describe all these under the methodology. Then you will write the limitations. आपके research की क्या limitations रही है, किस limit तक आपने research किया है, आपकी limitation क्या है, किस sector तक आपकी यूज कर सकते हैं आप अपने रिसर्च को. 10 इंडस्ट्रीज पे यूज कर सकते हैं, 5 इंडस्ट्रीज पे आपने यूज किया, तो व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ योर स्टडी, यू विल एक्सप्लेन इन योर रिसर्च रिपोर्ट. देन फाइंडिंग्स,
आपने क्या क्या फाइंडिंग्स ली, क्या क्या फाउंड किया है आपने, क्या आपका रिजल्ट रहा है, तो क्या क्या आपकी कंक्लूजन है. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द रिपोर्ट. इट शोज द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ नरेशन एज वेल एज चार्ट, ग्राफ्स, इमेजेस एंड फाइंडिंग्स शुड बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च. तो आपके ऑब्जेक्टिव रिसर्च के जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे वो उनके उनके अकॉर्डिंग आपकी फाइंडिंग्स आप कुछ फाइंड कर पाए या नहीं, वो आप शो करोगे थ्रू द चार्ट और ग्राफ और इमेजेस. देन कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशन. तो आपने क्या कंक्लूजन निकाला, आपकी रिसर्च से क्या कंक्लूजन निकाला और आप क्या रिकमेंड करते हो फर्दर, इसके लिए क्या रिकमेंड करते हो, यू विल राइट दैट इन डिटेल इन योर रिसर्च रिपोर्ट. Then annexure. In annexure, it provides supplementary extra, that is extra information which supports the body of the report but which cannot be given within the report. तो annexure में आप क्या लिखेंगे कि आपने कौन कौन सी साइट से डेटा दिया है, कहाँ से लिया है. एक्चुअली उस उन डेटा को आपने क्लियरली अपनी रिसर्च रिपोर्ट में नहीं डालना, क्योंकि अगर आप हर एक इन्फॉर्मेशन डालोगे जहाँ से आपने रिसर्च लिया है, जहाँ से आपने रेफरेंस, आपने खुद ने भी रेफरेंस लिया है, आपने जहाँ से डेटा कलेक्ट किया है, अगर उनकी हर एक चीज आप डालोगे तो दिस टेक वेरी लॉट टाइम और आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट का साइज है वो भी बहुत लेंथी हो जाएगा. ओके, तो उसके केस में आप क्या करते हैं, नेक्स्ट में बनाते हैं जिसमें आप लिखते हैं, आपने वेरियस आपने वेबसाइट्स दी होती है कि हमने ये डेटा इस वेबसाइट से लिया है या हमने ये वाला आर्टिकल एज अ रेफरेंस लिया है, तो आप वो लिखते हैं. ओके, तो आप बहुत सारे लिंक्स देंगे या आप रेफरेंस देंगे कि हमने यहाँ यहाँ से ये रेफरेंसेस लिए. Then last is bibliography and references. Bibliography contains the detailed information on the books, journals, and other materials, authors, publishers, and year of publication, and the possible the page number used in the preparation of report. Reference lists of the part of the bibliography which contains the citation used in the literatures, uh, surveys arranged in alphabetical order. ओके, तो बिब्लियोग्राफी में जो रेफरेंस आपने लिए हैं, जो बुक्स आपने यूज की है स्टडी के लिए, जो जर्नल्स आपने यूज किए, जो मटेरियल्स यूज किए, उस जर्नल के भी कौन से पेज से आपने रेफरेंस लिया है, तो आप डिटेल इन्फॉर्मेशन कि आपने कहाँ कहाँ से ये डेटा लिए हैं और कहाँ से आपने रेफरेंस लिया है. Okay, so this is all about your fourth unit, and with this lecture your syllabus is over. Okay, so if you face any problem in your online lecture series or any kind of problem, then you can ask for conduct a Zoom meeting also or any through any other software. So that's it for today. Now there is some important questions from exam point of view. So from last unit, that is for fourth unit. So these are some important questions from example two. First is explain the descriptive analysis, explain types and nature of descriptive analysis. Second is explain the types of research report. And third is what is research report? Narrate the various steps involved in research report. Okay, so these three are the important questions which can be asked in your exam for fourth unit. Okay, so that's all for your BRM subject. So thank you guys.